Hello students, it's Khushbu from Kakatiya School, and yesterday we had seen the meaning of business, economic activity and the non-economic activity, and we had also seen the difference between the economic activity and the non-economic activity. Fine. So today we are moving further with the chapter, and today we are studying the types of economic activities. And yesterday we had seen the three meanings, that is of business, profession and employment. Fine. So over here it is given that there are mainly three types of economic activities. The first one is business, the second is profession, and the third one is employment. So let me just revise what is business, profession and employment. Business means any activity which is done with the purpose of getting profit is termed as a business. Profession means the person who is having the specialized knowledge or a specialized skill in the particular subject and he is having the specialized degree is treated as a profession. And employment means we are doing job or the someone is giving us the employment opportunities, that will be treated as employment. Business meaning and definition. The term business is derived from the English word busy, which means to remain active or to be active continuously. Business is carried out with the motive of getting profit and wealth. The concept of business is related with the profit motive. Sometimes loss is incurred in the business even though it is an economic activity. A brief and precise definition of business can be stated as follows. Business means any legal economic activity with the motive of profit. So yesterday we had seen that business means any activity which is done with the purpose of getting the profit is termed as a business. No doubt there are some situations or sometimes it happens in the business that because of some reason or because of some situations the business may suffer a loss. No doubt, but इट इज़ ट्रीटेड एज अ बिज़नेस ओवर ईयर. वाई? बिकॉज अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये साल में अगर लॉस हुआ है तो yesterday we had seen that business is a continuous activity, so we are doing the business with the purpose or with the motive in our mind that we are going to run this business for the longer period of time. Fine. So अगर कितने सालों से हमारा बिजनेस हो रहा है तो इट वॉज ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वाई? बिकॉज इतने सालों से जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब से तो हम लोग प्रॉफिट ही अर्न करते थे. तो बिकॉज ऑफ सम रीजन्स और बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फाइनेंशियली कुछ बैड डेट या वो कुछ हो जाता है. मतलब अगर हमने किसी को क्रेडिट में कुछ दिया था और उसने वो ज़्यादा अमाउंट में हमने दिया था एंड दैट पर्सन इज़ नॉट पेइंग बैक टू अस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है तो भी ये 1 या 2 साल में तो वो जो लॉस है वो शायद रिकवर हो जाता है. सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ बिजनेस ओवर हियर, एंड द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्टेट्स that business means any legal economic activity with the motive of profit. So business is a legal activity. Why? Because before starting the business you need to take the permission from the government as well. So for example, if you are trying to opening the shop in any of the city or town, then for that shop you need to register yourself and you have to create a shop act license according to the shop act. शॉप एक्ट लाइसेंस जो है वो आपको परचेज करना पड़ता है. अगर वो लाइसेंस गवर्नमेंट जो है यू हैव टू टेक दैट लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड अगर गवर्नमेंट या म्यूनसिपल अथॉरिटी वो लाइसेंस आपका अप्रूव कर देती है उसके बाद ही आप अपनी शॉप जो है वो खोल सकते हो. अगर हम शॉप खोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ बिजनेस बिकॉज हम लोग ये मोटिव के साथ खोलेंगे कि नहीं इट विल गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी है तो कंपनी ऑर्गेनाइज करते हो, कंपनीज दे आर ऑल्सो डूइंग द बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर डूइंग द बिजनेस. But before opening the company you need to make the register of the companies at ROC. ROC means register of companies, and ROC की जो ऑफिस होती है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ROC अप्रूव कर देती है विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, then only you can start the company, otherwise you cannot. So it is also considered as a legal economic activity. Moving further towards the characteristics of business. Objective of profit. The fundamental objective of a business is to obtain the profit through the economic activity. In the absence of profit, there is no possibility of business. So, see, the fundamental objective of business is that to obtain the profit from any of the economic activity. But if you are not having the profit, then will your business run for a longer period of time? Yes or no? So that is a question mark. Profit is essential to continue the business. So over here, profit is considered as the main object to continue the
business. The goods are sold at a price higher than the cost price is considered as a profit. What is profit? Profit means जो हम लोग जितनी भी चीज़ है वो जो प्राइस से हम लोग परचेज करते हैं उससे कुछ ज़्यादा प्राइस में अगर हम लोग सेल कर देते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट ओवर हियर. द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज़ इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट. और बिजनेस की जो एफिशिएंसी है मतलब कितना एफिशिएंटली हम लोग वर्क करते हैं. अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है तो आउटसाइडर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या हमको शो करेंगे कि नहीं ये जो बिजनेस है इट इज़ एन एफिशिएंट बिजनेस, ये अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है. सो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस. बैरोमीटर मीन्स ही इज पुशिंग द बिजनेस टूवर्ड्स द सक्सेस. Second, exchange of goods and services. Exchange of goods and services takes place when the goods and services are sold either by the manufacturing or by purchasing. सो बिज़नेस करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज तो करनी पड़ेंगी. क्यों? इफ़ वी वांट टू सेल द गुड्स वी नीड टू परचेज इट फ्रॉम समवन. फाइन. सो exchange of goods and services is possible in the business. Business involves exchange of goods and services. Goods in the physical form and service in invisible or intangible form are exchanged. So goods की हम लोग लेते हैं या गुड्स सेल करते हैं, that will be in the physical form. Why? Because we are selling that goods. बट अगर हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस विल बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी. इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट. असेट मीन्स इंटेंजिबल फॉर्म मीन्स द वन विच कुड बी सीन और फील बट इट फिजिकल इट इज़ नॉट देयर. अगर हम लोग किसी को सर्विस देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने सर्विस दी थी, बट क्या हम लोग सर्विस को लेकर जाएंगे उसको दिखाने के लिए कि देख भाई ये मैंने सर्विस दी है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. For example, a company manufacturing the electric equipments exchanges the physical goods while the company providing the electricity exchanges the services. See, the example is the best. That a company who is manufacturing the electric equipment, they will give the physical goods in exchange. Why? Because they are producing that equipment. But electricity की जो companies है, they are giving the service of electricity. So they have to measure that service. It is an intangible form. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. यस्टरडे भी हमने देखा था इन द डिफरेंस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड द सेम इज ओवर हियर. बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स. इट इन्वॉल्व्स द मैन मेड रिस्क सच एज फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट्स, रॉबरी, थेफ्ट, change in the preferences, decrease in the demand, change in the lifestyle of the public, taste, habit, competition, change in the technology, etc. are the natural risk, etc. While natural risks like tsunami, earthquake, storm are also involved. All these risks adversely affect the income of the business. The returns from the business becomes uncertain due to various risks. Sometimes there is a loss in the business due to risk, even though the motive of the business is profit. See, risk मतलब there are two types of risk. The one is man-made risk and second one is natural risk. Man-made risk का हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. The one is fire. फायर मतलब हमारी ही लापरवाही की वजह से अगर हमारे कंपनी, ऑफिस, शॉप में अगर फायर हो जाता है. वाई? बिकॉज हमने ही लापरवाह थे, वी वर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग. सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैन मेड रिस्क. एक्सीडेंट मतलब कोई मशीनरी वाली जो कंपनी है, दे आर हैविंग द ह्यूज मशीनरीज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स फ्रॉम दैट मशीनरी, बट द एम्प्लॉय हु इज ऑपरेटिंग दैट मशीनरी ही वॉज lethargic or he was not performing good and because of that purpose कुछ भी एक्सीडेंटली उसका हाथ कट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मैन मेड रिस्क. क्यों? क्योंकि उसने खुद की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ था. स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस है, वो लोग अच्छी सैलरी उसके एम्प्लॉयज़ को नहीं देते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो वो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग अगर स्ट्राइक पे चले जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिस्क. क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो जितने दिन स्ट्राइक चलेगी उतने दिन का काम कौन करेगा? उतने दिन में जो लॉस होगा, आफ्टर ऑल दैट लॉस जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर को कंपनी को ही बैर करना होगा. क्यों? क्योंकि कंपनी की ही तो मिस्टेक थी कि उन्होंने अच्छे सैलरी नहीं दी, उसी की कोई भी रीज़न से उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ थे वो सारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए. राइट्स, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन द प्रेफरेंसेस मतलब पर्सन के जो प्रेफरेंसेस है वो सब चेंज हो जाते हैं. चेंज इन द डिमांड मतलब पहले पब्लिक जो थी वो ये डिमांड करती थी, अब उससे कुछ अच्छी चीज़ हमें चीप रेट पर मिलती है तो पब्लिक जो है उसकी डिमांड चेंज हो जाती है. तो हमने फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज ओवर योर आई शुड से टी एंड कॉफ़ी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी की डिमांड ज़्यादा थी, बट जैसे ही जनरेशन चेंज होती जा रही है, दे आर डिमांडिंग मोर फॉर द कॉफ़ी. बट इफ़ we are charging 40 rupees for the tea and if you are charging 35 rupees for the coffee and the demand of the coffee is more, but अब वैसे जो टी वाला है उसका बिजनेस तो
टूट जाने वाला है, दैट विल ऑल्सो चेंज बिकॉज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पब्लिक की लाइफ स्टाइल चेंज होती है। तो क्या होगा बिजनेस में, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लोथ्स की शॉप है और वहाँ पे हम लोग जीन्स और टी शर्ट से हो, एक पैटर्न के अगर ज़्यादा डिमांड थी तो हमने एक साथ बल्क में 2000 जीन्स मंगा लिए सेम पैटर्न के, एंड विद इन 20 डेज हम लोगों ने सिर्फ 300 या 400 जीन्स का सेल हुआ और 20 दिन के बाद फैशन जो है वो चेंज हो गई। तो क्या होगा, जो हमने 2000 जीन्स मंगवाए थे उसका हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इतना सारा स्टॉक है बट उसकी डिमांड ही तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। हैबिट, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे ही डिमांड रिस्क भी हमारा बढ़ता है, एंड नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर विद यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। Creation of utility takes place in three ways: form, place, and time. When raw material is converted into the consumable finished goods, creation of form utility takes place. See, creation of utility means how to create that goods and how you occupy that goods. See, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, when raw material is converted into the consumable finished goods, creation of form utility takes place. Form utility जो है वो कहाँ पे क्रिएट होगी, हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं और रॉ मटेरियल्स में से हम लोग उसको फिनिश्ड गुड्स, मतलब द गुड्स विच आर रेडी टू सेल, रॉ मटेरियल में से हम लोग उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन द गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम प्लेस टू द प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब हमारा गोडाउन में से अगर हम लोग शॉप पर लेकर जाते हैं, मतलब कंपनी के गोडाउन में से हमारे शॉप पर जो आती है, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। And goods are stored when they are not needed and supplied at a time when the need creation utility timing take place. Goods are stored when they are not needed and supplied at time when they are needed. Creation of, see, कुछ सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स में क्या होता है कि वुलन क्लोथ्स है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कब होगी, इन द सीजन ऑफ विंटर। बट अगर हम लोगों को ये विंटर सीजन में चीप रेट पर हम लोगों को कोई भी गुड्स, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स वो सब अवेलेबल हमें मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ हम लोग चीप रेट पर अवेलेबल हमारे पास स्टॉक में रखेंगे और नेक्स्ट विंटर सीजन में हम लोग उसको सेल करेंगे, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। Continuous of activity. Transactions are carried out regularly and continuously in the business. Business is an ongoing monetary activity. A businessman does the activity of purchase and sale continuously with the objective of profit. If a trader or a producer constructs a building for his residence and later on sells it and earns profit, it is not a business because the activity of purchase and sale of building is not a regular and continuous activity for him. सी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, मीन्स हमने देखा था बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, फाइन। बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कोई मिस्टर एक्स है और उसने क्या किया, उसके पास एक घर था, उसको वो घर अच्छा लगा तो उसने परचेस किया, थोड़े साल वो घर में रहा एंड एट द एंड ऑफ 10 years ही सोल्ड दैट हाउस। तो क्या उसको हम बिजनेस बोलेंगे? नो। क्यों? क्योंकि उसने नो डाउट उसने प्रॉफिट के साथ सेल किया था बट उसकी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी तो नहीं थी परचेजिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द हाउस। Requirement of money. Money is required from the beginning to the end of business. Money is required to manufacture finished goods from the raw materials in the factory and also by the trader to purchase the goods. See, requirement of money is also the main purpose of business because अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम लोग बिजनेस कैसे रन करेंगे। The example is money is required to मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल्स हमारे पास पड़ा है, रॉ मटेरियल्स में से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी प्रोसीजर हम लोग करेंगे उसके लिए तो हमें पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर आइदर मशीनरी करेगा, तो मशीनरी करता है तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसको सैलरी देनी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। और अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो मशीनरी तो हमें परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। सो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज़ ऑल्सो द मेन पर्पज़ ऑफ द बिजनेस। और अगर कोई ट्रेडर है उसको कुछ भी चीज़ परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए भी उसको पैसे चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। सो हमारे पास रेगुलर इनकम भी होगी और हमारे पास जो प्रॉफिट भी होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द बिजनेस। एंड सी आई एम गिविंग द होमवर्क ओवर हियर। मैं होमवर्क में नोट जो है वो ऐसे लिखूंगी, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। फाइन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आप लोग पहले फेयर बुक में क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन द फेयर बुक। एंड पहले आप लोग लिखो गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फिर नीचे हेडिंग डालोगे द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम लिखोगे
and then you will write the description. You are not supposed to copy the description from this video nor from the textbook. जो explanation दिया है उसमें से ही आप लोग अपने आप से in your own language you have to write down the explanation. Fine. Thank you.